In a milestone judgment, the Supreme Court has recognized the rights of sex workers, saying that they are entitled to a life of dignity irrespective of their profession. NDTV'S Vedanta Agarwal brings us this ground report from Delhi's red light area. Never thought we'd see this day in our lifetimes. A meek voice comes wafting to me from the narrow aisle that leads to the coveted Kamra number 50 of the infamous GB Road, home to the capital's sex workers. Amidst the cacophony and chaos that defines Delhi's red light area, what was peculiar this instance was the spectacle of sex workers claiming their moment in the sun. A Supreme Court order that legitimizes sex work and proposes the possibility of a dignified life for these women living on the fault lines of the national capital. In its order, the Supreme Court has championed the cause of the sex worker by emphasizing that human decency must be central in the attitude of the police and law enforcement agencies when dealing with sex workers, that one is entitled to a life of dignity regardless of their profession. तो दीदी सबसे पहले ये बताइए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से क्या-क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, पुलिस का, समाज का व्यवहार क्या पहले से कुछ बेहतर हुआ है? जिंदगी वो, मैं तो यही सोचती हूँ कि ऊपर वाला वो जिंदगी किसी को ना दे जो जिंदगी हमने काटी है। ना पुलिस वालों ने हमें मदद करी थी, अब जिसने बेचा, जिसने लेके आया था, जिसके पास बेचा, दलाल लोग ने भी हमें, जिसने खरीदा था। पुलिस वालों का व्यवहार जैसे कैसा रहता है जब आप वो छापा मारते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर, तो क्या कम से कम वो एक इंसानियत का ध्यान रखते हैं, इंसानियत का ख्याल करते हैं? नहीं, जब भी वो छापा मारते थे तो जिसने हमें खरीदती थी ना, वो दीदिया तो हमें चुका देते थे छोटे छोटे कमरों में। कई बार स्टाफ कमरा तोड़ के भी निकाला हम लोगों को। हमने कई मदद भी मांगा कई बार पुलिस वालों से कि हमें ये धंधा में नहीं करनी है और हमें इस लाइन से हटा दो, हमें मदद करो। पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी हमारी। अब वो इसलिए नहीं सुनते थे कि पैसा हम दे नहीं सकते थे पुलिस वाले के पास, हमारे पास पैसे नहीं था। जिसने पैसे ये पुलिस वाले आज भी जितने दलाल नहीं खाते ना, उतनी उससे ज्यादा कमीशन आज पुलिस वाले खाते। चाहते हैं कि इस धंधे से बाहर निकले। हर एक कोई अपना इतना गलत लाइन में इतना जिस्म बेचना कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन हमने हर चीज से हमने हार चुके, मदद मांग के भी हार चुके, लेकिन हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई मदद नहीं दिया हमें। The Supreme Court's guidelines will hold the field till the time the government comes up with a law that addresses the apprehensions of sex workers and gives them the means to a dignified life. The government is expected to respond to the recommendations made by the court-appointed panel. सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही जो काफ़ी ज़रूरी है, वो ये कि किसी भी सेक्स वर्कर का अगर अपना बच्चा है तो वो उसका पूरा अधिकार है कि वो बच्चा उसके साथ रहे, उस बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती से अलहदा ना किया जाए उस सेक्स वर्कर से। तो इस तरीके के भी मामले आते हैं सामने? हाँ, पहले ऐसा होता था, जैसे किसी सेक्स वर्कर का बच्चा होता था तो उसे जो उनके अंदर होती थी वो मतलब उनसे दूर कर देती थी, ताकि ये कहीं इसकी माँ मतलब कहीं जाए ना और उनको धंधा करके पैसा उनको देती रहे। अगर नाबालिग रहती है जैसे वो, तो उसको तो ले जाते थे, मतलब वो सुरक्षा गृह में डाल देते थे कि मतलब यहाँ से बच जाए। और आपकी समाज से, पुलिस से और जो भी इस लड़ाई में शामिल हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो एक्टिविस्ट्स हैं वो हो, उन सबसे आपकी क्या गुहार है? हम ये कहते हैं उनसे, मतलब हमें ना लीगली तौर पे यहाँ पे रहने दिया जाए। जी हाँ, नहीं ये तो अभी तो सरकार तो हमें तो कहती है ये काम लीगल नहीं है, तो हम कहते नहीं, हमें यहाँ पे लीगली तौर पे रहने दिया जाए, हमें इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी की। हमें फुल आज़ादी चाहिए, आज़ादी से हम रह सकते, अपने जीवन व्यतीत कर सकें। In its order, the Supreme Court does not just guarantee a dignified life to these women on the margins, but also gives them the choice to get out of the profession. And that choice to these women is sacrosanct. Because they say that while they're in this profession out of their own will, they must also have the right to get out of this profession as and when they want, for the betterment of not just themselves, but also their families and their children. When I ask why she needs protection from the media, she says, blurring our pictures is not enough. The story in the media needs to change.
calling out the media for voyeurism, blatant shaming and inadvertent defamatory remarks. At a time when policy makers consider consent to be a grey area and say that that is one of the reasons why implementing a universal law for sex workers is difficult, these women sex workers here reiterate emphatically and clearly that consent is what defines the debate. तो इसलिए हम तो चाहते थे कि इसके लिए कोई एक कमेटी बन जाए जिसमें कि डॉक्टर हों, वकील हों, पुलिस हों वगैरह वगैरह, ये जो भी सरकारी महकमा है, जो लड़की अपनी स्वेच्छा से आना चाहती है, इस पैसे में रहना चाहती है, अपना जीविका चलाना चाहती है, तो वो वहाँ से उसकी पूरी वेरीफाई हो जाए, हैं, उम्र का और इसका वगैरह, मर्जी शामिल है कि नहीं, स्वास्थ्य वगैरह, ये किसी ने इसको किडनैपिंग करके तो नहीं लाया, ये कोई बाहर की तो लेडीज नहीं है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है कानूनी कार्रवाई वो पूरा होने के बाद वो अपना रेड लाइट एरिया में आके किसी भी कोठे में रह के अपना जीविका चलाए. The police should not abuse them physically or verbally, the court says, asserting that as members of civil society, the sex workers' complaints and grievances must be addressed effectively and humanely. Society has marginalized sex workers multiple times over, based on its own shifting moral yardstick. To that end, the Supreme Court has settled the long-drawn, murky debate around the morality of sex work by introducing the caveat of consent. The fact of the matter is no action has to be taken against the sex worker. If they have been coerced, then it is the trafficker against whom the action has to be taken. So far as the sex worker is concerned, in both circumstances, whether he or she has been coerced or it is voluntary, the sex worker is not at fault. Most of the time, the authorities kind of assume that if somebody is in sex work, it's because he or she has been coerced and therefore he or she has to be put in a protective home and she is taken away forcibly, sometimes for years, put in a protective home, which is like a prison. And if indeed she voluntarily decides to carry out her profession, the onus is on the government to create conditions in which she can do so, freely, without being slandered, vilified or arbitrarily harassed. With the top court's intervention, while a dedicated policy for sex workers is inevitable now, the centre still remains wary about some of the court's recommendations. The government tells us that with sex work legal, it will be difficult to identify trafficked women and rescue their children. The vibrant community of sex workers transcends religion, creed, caste and binaries of all form and epitomizes a unique camaraderie of women fending for themselves. The incredible women and sex workers of Delhi's infamous GB Road are symbols of resistance and empowerment in the true sense. They do ask for a little humanity, but more than that, they demand legal recognition. They say that like all other members of civil society, they too have a right to practice their profession freely and also seek legal redressal. The long due Supreme Court judgment has come at an interesting time, but people here are bleak. Even after a series of orders and verdicts and judgments, things here remain unchanged. In New Delhi, with camera person Kanan Patra, this is Vedanta for NDTV.